Hello, students. Today we are going to study the poem Animals by Walt Whitman. As I have always been telling you, that poems should be studied not by their words but by their sense, because the poet symbolizes something to express his ideas. What does it want to say to the reader? It must be derived from the sense which he is going to explain. कवि क्या कहना चाह रहा है इसको उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके भाव से, उसके प्रतीकों से we can understand. And Walt Whitman, the American poet, is just like Nirala in Hindi. As you know, in course of studying Hindi, you are aware of the fact that Nirala was the first poet to introduce writing poems without rhymes. बिना किसी छंद के कविता लिखने की शुरुआत निराला जी ने की थी. And he was said to be a revolutionary for Hindi poetic world. And so was Walt Whitman. In this poem, talking about animals, he says about the mankind. And this is the technique of the poet to express ideas. Sometimes you would have observed that sometimes we think about something and do not say clearly that it is not so. Suppose that you have a friend and you are telling him that I am not going to be your friend now. I will be friend of others. You can say it plain, in a plain way. आप इसको सीधे शब्दों में किसी मित्र को आपको कहना है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, तो you can say it plain. But the other method of expressing your idea can be like this, which is used in poem. So I am discussing about this. मैं तुम्हारे साथ मित्रता नहीं रखूंगा, मैं किसी दूसरे को मित्र बनाऊंगा. If you want to say like this, if you want to say that I will keep that very man as my friend instead of you, तो आप कहेंगे कि मैं तुम्हें मित्र नहीं बनाऊंगा बल्कि उसे मित्र बनाऊंगा, मैं उसे मित्र बनाऊंगा. प्रश्न उठेगा व्हाई? तो आप जवाब देंगे कि वह मुझसे कर्ज नहीं मांगता है. ही डू नॉट आस्क फॉर मनी फ्रॉम मी. ही नेवर डिस्टर्ब्स मी. ही नेवर थिंक्स ill feelings about me. He never comes to my house in vain. These are the points. आप कह सकते हैं कि मैं उसे मित्र बनाऊंगा क्योंकि वह मेरे घर रोज तंग करने के लिए नहीं आता है, वह रोज मुझसे पैसे की मांग नहीं करता है, वह रोज मुझे अपना दुखड़ा नहीं सुनाता है. And this clearly proves that you do so. इसका मतलब आप अपने उस मित्र को जिसे आप छोड़ने वाले हैं उसको आप कह रहे हैं कि तुम ऐसा करते हो. The next coming friend doesn't want money from me. It means you want money from me. You ask for money. He doesn't disturb me. It means you disturb me.
यानी कहा जा रहा है कि वह ऐसा नहीं करता है, इट मीन्स यू डू सो, तुम ऐसा करते हो. एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम एनिमल्स विच द पोएट इज गोइंग टू डिस्कस. He talks about animals, what animals do not do. The poet wants to stay with animals, want to return to animals. Why? Because they do not do what human beings do. कभी आदमी के साथ नहीं बल्कि जानवरों के साथ रहना चाहता है, जाना चाहता है. The question arises, why does the poet want to be with animals? And in the answer of these questions, he expresses his ideas that animals do not do what human beings do. And the poem proceeds on in this way. So let's study the poem. It is very symbolic poem, and we should always be aware that poems should be taken to its sense. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-content. The first quality of the animal is expressed in the very first sentence of the poem. I think, मैं सोचता हूँ. I could turn, मैं लौट सकता. I could turn. Try to sense the word the poet is using here. I could turn and live with animals. मैं सोचता हूँ मैं लौट सकता और जानवरों के साथ रह सकता. The question is why? The answer is they are so placid and self-content. Two words are used here, placid and self-content. Placid means saumya, shant. You may ask that all animals are not placid. No, all animals are placid. Even it is a lion, he is placid in its place. शेर भी है तो वो बिल्कुल अपने मान में शांत पड़ा रहता है. ही इज प्लेसिड, ही डजंट डिस्टर्ब एनीवन. किसी को डिस्टर्ब करने के लिए ही हिमसेल्फ नेवर ट्राइज टू डिस्टर्ब अदर्स. ओनली ही प्रेज व्हेन ही नीड्स फूड. इट इज नेचुरल डिमांड. नॉट अननेसेसरीली he is going to disturb others, to disturb the animals of the other animals of the forest. He doesn't do so. It means animals are placid, वे शांत हैं, सौम्य हैं, and self-content means self-satisfied. वे अपने आप में संतुष्ट हैं. It means the poet wants to say that human beings are neither placid नॉर सेल्फ कंटेंट. वे आत्मतुष्ट भी नहीं हैं, अपने आप में संतुष्ट भी नहीं हैं. दे आर नॉट प्लेसिड, वे सौम्य भी नहीं हैं. दे अननेसेसरीली ट्राई टू डिस्टर्ब अदर्स. दे नीडंट टू डू सो, बट दे डू. एनिमल्स आर प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट. आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. What words are used by the poet, you can imagine. I stand, मैं खड़ा रहता हूँ. And look at them, और उनको देखता हूँ. Long and long, बहुत बहुत देर तक. You go to zoo and see the animals, although they are not in their natural habitats. You will read the other poems about the animals in other videos, but here they are not in natural habitats, but to see them is very pleasant for the poet.
I stand, so he says, I stand and look at them long and long. बहुत बहुत देर तक मैं उनको देखता रहता हूँ, उन जानवरों को. Now, in coming sentences, the poet wants to identify the qualities of the animals for which he loves them. And try to remember these sentences. What animals do not do, but human beings are supposed to do so. Human beings are doing these works, but animals do not do. What are those works? You should underline them. They do not sweat and whine about their condition. Sweat means पसीने पसीने होना. स्वीट मीन्स होता है पसीना. वे पसीने पसीने नहीं होते हैं. एंड वाइंड अबाउट देयर कंडीशन, और अपनी स्थिति के विषय में शोक करते हैं. एनिमल्स डू नॉट स्वीट, उनको पसीना नहीं निकलता है. नॉट फिजिकली पसीना, बल्कि पसीना निकलना हम लोग जब किसी टेंशन में होते हैं और जब कोई परेशानी होती है, देन वी स्वीट, कहते हैं ना कि वो पसीने पसीने हो गया. बट एनिमल्स नेवर स्वीट, वो पसीने पसीने नहीं होते हैं. वाइन अबाउट देयर कंडीशन, और अपनी स्थिति के विषय में चिंताग्रस्त और शोकग्रस्त नहीं होते हैं. एनिमल्स never think about their condition, that they are in very bad condition, but human beings are always anxious. Either it is the richest person like Ambani and others, and even it is a poor man, he is always whining about condition. अपनी स्थिति के विषय में हम लोग चिंतित रहते हैं. But the animals do not sweat and whine about their condition. The first quality of an animal for which the poet likes them is that they do not sweat and whine about their condition. Next, they do not lie away. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. ह्यूमन बींग्स में आप देखेंगे कि अंधेरे में हम लेटे रहते हैं और अपने सिंस के विषय में, पापों के विषय में सोचते रहेंगे. आज हमने ये किया, आज हमने ऐसा किया, ऐसा किया, वैसा हुआ हमने जीवन में. दीज आर द प्रॉब्लम्स विद द ह्यूमन बीइंग्स, दैट दे लाई अवेक इन द डार्क. अंधेरे में वो जगे हुए लेटे रहते हैं. द दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, वे अंधेरे में लेटकर जगे नहीं रहते हैं. एंड वीप फॉर देयर सिंस, और अपने पापों के लिए रोते नहीं रहते हैं. इट मीन्स एनिमल्स डू नॉट थिंक दैट दे हैव कमिटेड सम सिंस एंड दे शुड वीप फॉर देम. नो, दे डिडंट डू सो, बिकॉज दे डू नो सिन. एंड ह्यूमन बीइंग्स are always anxious about their sins, because although they are hidden, they do not express their sins to others. They are not ready to say someone that he has done so and so. But at night, in the dark, they lie awake and weep for their sins. अपने पापों की चिंता करते रहते हैं. But animals do not do so. So poet likes them. I have already told you that the poem says that what animals do not do, and these are expected from human beings. मनुष्य से इसकी आशा की जाती है, मनुष्य ऐसा करता है. But animals do not do so. And so the poet loves them. The next, they do not make me sick discussing their duty to God. It is also a trait of human beings that they always are anxious about their duties to God.
व्हाट दे शुड डू फॉर गॉड। आप लोगों ने सुना होगा उपदेशकों को अक्सर कहते हुए, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए भगवान को पाने के लिए, स्वर्ग और नर्क को पाने के लिए, यू शुड डू सो एंड सो। ये व्हाट इज दिस? हम लोग गॉड के लिए जो हमारी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटीज के विषय में अदर पीपुल्स टेल अस, हम लोगों को बताते रहते हैं कि तुमको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ये उपदेशकों पर, दिस इज अ सेटायर ऑन द प्रोफेट्स who always tell us that you should do something and something for God. You should go to temples, you should donate something for the God, you should visit pilgrim places, so and so. And these are the duties towards the God done by human being, but animals do not need to do so. They needn't do so because he is so simple that he doesn't know what is God. So he is simple. Simplicity. Not knowing God is better than to know the duties about the God. In this sentence, the poet wants to emphasize this fact, that to searching God and to weep about the duties and to know about the duties towards the God is not important. But the important is that you should be natural as God has made you, if you know God. But human beings are always thinking for that. And here, they do not make me sick. वे मुझे बीमार नहीं करते हैं। यहाँ सिक का अर्थ बीमार नहीं है, यहाँ अर्थ है मेक, टू मेक सिक मीन्स किसी को तंग करना, बार बार किसी बात को कह करके और उसको तंग करना, दैट इज मेक सिक, चिढ़ा देना। तो वे मुझे नहीं चिढ़ाते हैं, मुझे यह बताकर कि ईश्वर के प्रति तुम्हारी ड्यूटी क्या है। यहाँ उन उपदेशकों के प्रति, उन प्रोफेट्स के प्रति पोएट ये उसके अगेंस्ट लिखता है कि वे मुझे, दे डू नॉट मेक मी सिक, वे मुझे बार बार यह कहकर कि व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ए पर्सन टुवर्ड्स द गॉड, ही, एनिमल्स डू नॉट डू सो बट ह्यूमन बीइंग्स डू सो। यू विल फाइंड एवरीवेयर that someone is telling others that you should not have done so. You should go to Badrinath, you should go to Kedarnath, you should go to Devghar, and so and so. You should offer flowers to the God, you should bring money to the temples and give to priests. These are the duties towards God which people try to say, but animals do not do so. Not one is dissatisfied. This is very important. Not one is dissatisfied. कोई भी असंतुष्ट नहीं है. And all the human beings are unsatisfied. No one is satisfied with his condition. हम लोग तो पाते हैं कि कोई भी संतुष्ट नहीं है। कहा जाता है कि अगर किसी को पता चल जाए कि उसके पास इतना धन है कि 7 पीढ़ियों के लिए उसके पास धन है, तो भी वह चिंतित रहेगा। आप पूछा जाए कि क्यों चिंतित हो, व्हाई आर यू एंग्जियस, ही विल से दैट व्हाट विल बी ऑफ आवर 8th जनरेशन, हमारी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, इस चिंता में वो बंद रहेगा। इट मीन्स नो ह्यूमन बीइंग इज सेटिस्फाइड। एंड सो द पोएट सेज दैट नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड and not one is demented with the mania of owing things. It is the biggest problem with the human being that they have mania. Mania is a mental disease, you can say, पूर्वाग्रह जैसा जो ग्रसित रहता है भीतर मन में, and fixed in the heart. They have mania, and owing things is the main object of human life for human beings. हमारे पास ओइंग ऑब्जेक्ट्स, हमारे पास ढेर संपत्ति हो जाए, ढेर सामान हो जाए, सब कुछ हमारे पास हो जाए,
And the poet wants to emphasize that human beings are demented with the mania of owing things. सामान जमा करने के लिए वो परेशान है. You know well that if a tiger hunts an animal and it is sufficient for his food for 3 days, he will not kill any animal. He will not store the food for 1 month. If he finds a deer passing through his hole, his den, but he is not going to kill him. Why? Because he is satisfied. He has nothing to owe. उसको कुछ जमा नहीं करना है. और हम लोग आज शुरू करते हैं, we earn 100 rupees and try to save 20 rupees for future. We are thinking about the future. What will happen tomorrow? We are thinking about that. But they do not have mania for owing things. Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Here the poet wants to say that we are thinking about our forefathers. हम लोग अपने पूर्वजों के विषय में सोचते हैं, हमारे पूर्वजों ने ये किया, वो किया. एंड पोएट वांट्स टू से कि नॉट वन नील्स टू अनदर. कोई भी किसी के सामने घुटने नहीं टेकता है. घुटने टेकना मीन्स टू सरेंडर. नॉर टू हिज काइंड, और ना अपने जैसे के लिए, दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो हजारों वर्ष पहले हुए थे. किसी पशु को इसकी चिंता नहीं है कि हमारे पिताजी कौन थे, दादाजी कौन थे, परदादा कौन थे. He never thinks about that. They are completely unaware of these facts, unaware of the people of their kind, उनके प्रकार के लोग, who lived thousands of years ago. But we are always thinking about that हमारे दादा ने ये किया, परदादा ने ये किया. We are thinking about that. Animals do not do so. And nor they kneel to another. किसी के सामने घुटने नहीं टेकते हैं. तुम अपनी जगह हो, हम अपनी जगह हैं. Animals are so. They fight for their place. But this is not kneeling. किसी के सामने घुटने नहीं टेकते हैं. But today वी आर इन ए कंडीशन कि जरा सा हमको जिससे फायदा है हम उसके आगे घुटने टेक देते हैं, उसके तलवे चूमने लगते हैं. एंड दिस इज द इविल फॉर द ह्यूमन बीइंग. द पोएट वांट्स टू एम्फेसाइज, नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ. आज हम लोग सबसे ज्यादा सारी दुनिया के लिए चिंतित हैं. यहाँ the poet wants to say that not one is respectable. कोई उसमें रिस्पेक्टेबल नहीं है. हम लोग तुरंत होता है ना, कोई रिस्पेक्टेबल है, तुरंत अगर जो किसी पद पर है, किसी पोस्ट पर है, तो वी थिंक दैट ही इज रिस्पेक्टेबल. तो बड़ा आदरणीय है, आइए आइए बैठिए, उनको कहेंगे. और वैसा कुछ नहीं है. तो कोई गरीब आदमी आया तो उसको बैठने के लिए नहीं कहेंगे. दिस इज द ट्रेट ऑफ ह्यूमन बीइंग, दैट दे थिंक दैट समवन इज रिस्पेक्टेबल एंड समवन इज नॉट रिस्पेक्टेबल. It means they differentiate between the people. They think that this is respectable, इसका आदर किया जाना चाहिए, इसका नहीं किया जाना चाहिए. भी सेपरेट चेयर्स, इस चेयर पर वो बैठेंगे, इस चेयर पर ये बैठेंगे, इस पर कोई वो नहीं बैठेगा, वो है तो वो जमीन पर बैठेगा. Why? This type of differentiation, the poet opposes that this type of separation is not in animals. Not one is respectable or unhappy over the whole world. हम कहते हैं ना, आजकल आप बुजुर्गों को कहते सुनते होंगे कि अरे दुनिया बड़ी खराब हो गई है, आज कुछ नहीं. It means we are always anxious about the whole world. That world has been ruined. The moral has gone down. ऐसा हम लोग सोचते रहते हैं दुनिया के विषय में. दुनिया बड़ी खराब है. Not about ourselves. We do not think about ourselves, but we think about the world, the other people. हम लोग ये कहते हैं कि दुनिया बड़ी खराब हो गई है. But animals do not say so. They do not think that they are not unhappy over the whole thing, earth, that the earth has become very bad. So they show
their relations to me and I accept them. Now, the poet comes to the decision कि सो देयर रिलेशंस टू मी, इसलिए वे मुझसे अपना रिश्ता बताते हैं. इट मीन्स ह्यूमन बीइंग्स आर रिलेटेड टू द एनिमल्स. हम लोग भी कहते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे, ऐसा विकासवाद कहता है. सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, और मैं इसे स्वीकार भी करता हूं. दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ. टोकन, टोकन कहता है पहचान चिन्ह को. बैंक आप जाते होंगे तो यू आर गिवन टोकन्स, ये आपका पहचान चिन्ह है. यू हैव आई कार्ड्स, दैट इज ए टाइप ऑफ टोकन. वो टोकन ही है आपका. दैट इज योर आइडेंटिफिकेशन, दैट व्हाट यू आर. आप देखते होंगे बड़े बड़े नेताओं को किसी प्रोग्राम में और एक पहना दिया जाता है. दैट इज द आइडेंटिफिकेशन एंड दैट इज द टोकन. Poet says that animals bring me tokens. What type of tokens? That you are related to us. अपने साथ. And I accept them. So they show their relation to me and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly. Evince, evidence के लिए evince शब्द use there. कि they evince them plainly in their possession. They show that I have these tokens for you, that you are related to me. I wonder, मुझे आश्चर्य होता है, where they got those tokens. उनको वो tokens कहाँ मिला? Tokens means the evidence. यहाँ what is that? You may be asked that what are tokens? Tokens are the evidence that show that human beings are related to the animals. They are completely related to the animals. And these are the tokens, and the poet surprises that I wonder where they got those tokens, कि उनको वो token कहाँ मिला. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? क्या बहुत बहुत पहले मैं उस रास्ते से गुजरा था और मैंने वो टोकन्स गिरा दिए थे. इट मीन्स poet in the last line of the poem says that long ago human were just like animals, just like doing the same what animals do today. But human being developed, they developed some separate traits, and they are quite different from the animals nowadays. But the tokens they have dropped in past can be seen in the hands of animals. हम animals के हाथ में उन tokens को देख सकते हैं कि there was a time when you were completely with us and like us and you were behaving like us, but now you have changed yourselves. And this is the ending line and the conclusion of the poet, that we should never forget that we are completely related to the animals. They have evidence, and we should not do as mentioned in the poem, that we should not whine about our condition, we should not sleep in the dark and weep for our sins, we should not weep for the duties to the God, we should not make others seek for, and so what you have read in this very poem. And at this point the poet concluded that we should try to be in the same way, in the same placid, self-content way as the animals are. And the questions are asked in the poems, not as in the text, but you will be given some points and you will have to answer the questions. And I think I could turn and live with animals. What is the poet turning from? It means from human being to animals. He has become human beings and he wants to be animals. So यहाँ what is the poet turning from? Mention three things that humans do and animals do not. I have explained it quite clearly.
that क्या आदमी करता है और क्या पशु नहीं करता है, and the whole poem is related with this, so you can do it easily. Do humans kneel to other humans who lived thousands of years ago? Discuss in these groups. Uh, Sometimes in course of development, there have been different types of feelings among the human beings, and they would have done so to kneel others, because when ages ago, when there were tribes, maybe the powerful can suggest people to kneel down, and they would have kneeled down. This is only a discussion, and if we will have time, we will discuss it in the classroom, and you will do it, and it is a free verse, free poem, so you can't say that there is no rhyming word here, and the sentences are important. I think the poem would have been clear before you, and you would have completely understood what the poet wants to say, and how the poet has differentiated, or the poet has made a difference between human beings and animals, and what should our duty as human being, and should we keep the tokens of animals with us, and we should be placid, self-content, and happy, not unhappy, but happy every time. Thanks.